लास्ट क्लास रे पॉलिटिकल साइंस क्लास को पिला माने आस्ते ओटे कॉपी देला कि मल्टीपल डाकी थिले किछि Listen students, you must be knowing about the Britishers ruled India for nearly 200 years. ब्रिटिशर माने भारत को शासन कले नियर अबाउट 200 वर्ष भली बुले. ब्रिटिशर माने लेफ्ट इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 जेतबेले से माने इंडिया को छाडी करी गले फॉर गुड चिर दिन पई. इंडियन माने चाहिले इंडियन मानकर एक्सपेक्टेशन बा तांकर जो प्रॉब्लम को केमिते हमें सॉल्व करिबा. जेतबेले भारत स्वाधीन हैला भारत वर्ष पई गुटे सबुठाडो बड़ प्रॉब्लम थिला कोन ना विशेष करी इलिटरेसी. हमर विशेष आमे जोटा कहूचे कोन निरक्षरता. आउ कोन प्रॉब्लम रहितिला रिलेटिंग टू पॉवर्टी दारिद्रता. आउ कोन रहितिला रिलेटिंग टू आउ कोन बड़ प्रॉब्लम रहितिला सुपरस्टिशन और ब्लाइंड बिलीफ. आउ कोन रहितिला प्रॉब्लम पॉलिटिकल अवेयरनेस नथिला. एवं जेतेबेले इंडियन माने कोन करले भारतीय मानक पई गुटे स्वतंत्र किछि नीति नियम निर्धारण करिवे. तमे जेतेबेले एडमिशन करिछो किछि नीति नियम को बेस करे एडमिशन करछ ना सेम सोमोट एडमिशन करछ किछि नीति नियम अछि. तो ब्रिटिशर माने पळै गेले ब्रिटिशर मानक चिंताधारा रे आमे केमिति निजे को निजे शासित होबा एवं शासित होबा पई किछि रूल और रेगुलेशन दरकार. एवं से रूल रेगुलेशन को आमे इंपोज कले कोउतरे रिटन फॉर्मेट रे दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबे किए गोटे रिक्शा पुलर. कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबो किए भारत रो राष्ट्रपति. कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबे किए भारत रो प्रधानमंत्री. कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबे किए लर्निंग टू द डायरेक्टर. कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबे किए लर्निंग टू द टीचर. कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबे किए लर्निंग टू द स्टूडेंट्स. केही कॉन्स्टिट्यूशन रो बाहर ना आदि समस्त कॉन्स्टिट्यूशन को बेनिफिट हिसाब से ग्रहण करिवे. ताले हमें किछटा क्वेश्चन डिक्टेट करिथिले. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन कोन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. जेते नीति नियम अछि सबुठारु अधिक सार्वभौम बा सबुठारु क्षमताशाली नियम होउछ हमर कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बा भारत रो संविधान. जो माने से क्लास रे न आसीथिलो आज एगुडा कोन करबो फोटोकॉपी नै जीवो घरे आउथरे रीडिंग करबो ताकू ओडिया रे भी बुझाई देउची इंग्लिश रे भी बुझाई देउची. हला सेकंड क्वेश्चन इन इंडिया वेयर द सुप्रीम पावर रिजाइड्स. पिले मो उदाहरण स्वरूप कहबे भारत रो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हबा पूर्व से प्रथम गोटे कोन हेचंदी नागरिक अच्छा. नागरिक हैला परे परे हमर इलेक्शन प्रोसीजर चलेला. इलेक्शन में से जने एमपी ना एमएलए. एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मानक भितरे जो माने संख्या गरिष्ठता हासिल करंथांदी सेही मान को विथहोल्ड करी कि हमें कोन करो लीडर ऑफ द नेशन करो बा प्राइम मिनिस्टर बोली सिलेक्शन करो. प्रथम से दिने जने एमएलए ता परे परे हैला कोन कि प्राइम मिनिस्टर. तले मो पॉइंट कहबार उद्देश्य होउची सेकंड पॉइंट हमर कुह इन इंडिया द सुप्रीम पावर रिजाइड्स. सबठारु अधिक क्षमता को मानक हातर रहिची. एग्जीक्यूटिव हातरे ना लेजिस्लेचर हातरे ना जुडिशियरी हातरे ना पीपल मानक हातरे. तमे गणतंत्र शासन पढिछ. गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. तो हमें जानिले रेपुटेडली हमर लीडर ऑफ द नेशन जे होंतु हमर एग्जीक्यूटिव हेड जे होंतु लेजिस्लेटिव हेड जे होंतु हम जुडिशियरी सुप्रीम जे होंतु सब बेले पावर टा का हाथ रिजल्ट कर रही थाए लोक मान का हाथ. काहे कि पिले लोक मान का हाथ रही पावर रिजल्ट हे जदी हमें कहबा 5 वर्ष पई जणो हम निर्वाचन कले से किछि भलो काम कलेनी 5 वर्ष भीतर
आमे तांकु कास्ट असाइड कर दे पहले 5 वर्ष पर आउ वोट देले एटा हबो ना नहीं तेणु आमे जदि कहबा सुप्रीम पावर बा सुप्रीम अथॉरिटी प्रकृति रे का ऊपर बेस्ट करी रही थाए पीपुल मान का हाथ रे सेति पई रूसो जिम जैकेस रूसो कहछन वॉइस ऑफ द पीपुल इज द वॉइस ऑफ गॉड प्रकृति रे मानवर वार्ता होची मानवर वॉइस ऑफ द पीपुल जदि जनसाधारण जहा को निर्वाचन रे जितेबे से प्रकृति रे सुप्रीम अथॉरिटी हे पई नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाई इज the constitution of India became supreme. Constitution of India became supreme because no one can violate its provisions. आम constitution में जितने नीति नियम रही से नीति नियम को हम violate करि परिबा नाही जति के लिखा है केवल सेति अंडरस्टैंडिंग आम संविधान रे जहा लिखा है एवं प्रत्येक नीति नियम को आमे केबे हेले violate करि परिबा नाही constitution of India supreme because no one can violate its provisions के प्रोविजन बाहर को के जाई परिबा नाही तमे देखि दिबो बिले जते बेले प्रधानमंत्री सिलेक्शन हो बा राष्ट्रपति पर सिलेक्शन हो शपथ पाठ करंते से शपथ कला पाठ कला रे से माने कोन कहंते हम भारत रो संविधान को बेस करी हम सब किछि कार्य संपादन करिबो संविधान रो तदुर्धे हम कोनोसी कार्य करिबो नाही व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जते बेले पिले मो उदाहरण स्वरूप कहबी अधिकांश बेले तमु कहंते ने पिलाटर नेचर ता भलो नेचर तो भलो न इन द सेंस ता कैरेक्टर भलो न ता कंडक्ट भलो न तार विशेष करी सोशियल रिलेशनशिप ता भलो न आमे जेमते कंसीडर करू सेमती हमर पर्टिकुलरली आमे कहबा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा गोटे ही फॉर्मेट नेचर इट इज रिटेन जहां ही जे पिले जहां ही हेबो जहां ही होउतिला सब गुडा लिखित आकार रे रही छि एवं सेति पई आमे कहलु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटेन वन और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत वर्ष रे जते बेले संविधान को आमे विशेष करी पढिबा को जाऊ जेमते पिले देखिबो तम घर को गोटे कोनोसी लोक जीवा को चेष्टा करिवो तम डाटा खोजिबा को चेष्टा करिवो फास्ट होची हमर आधार कार्ड सेति पई मोबाइल कोन बैंक अकाउंट कोन जोटी देखिबो आधार कार्ड लिंक हिच आधार रे हमें पर्टिकुलर डाटाटा पाई जाई परिबा गोटे इंडिविजुअल बाबरे सिटीजन क सेमति मन रख पिले जते बेले कॉन्स्टिट्यूशन को हमें एंट्री करिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो हमर प्रकृति रे उपक्रमटा को गोटे कथा रे पिले कोइ जाय फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग तमे तम सांग घर को गलो सांग घरे पहुंचला बेले को लक्ष्य करिवो पिले गोटे तम संविधान को तमे गल विशेष करी संविधान हमें पाठ पढ़िबा हमें गोटे टॉपिक पाठ पढ़िबा तमे हिस्ट्री पढ़ो पॉलिटिकल साइंस पढ़ो सोशियोलॉजी पढ़ो तार इंट्रोडक्शन कोन तार एंट्री कोन कंटेंट कंटेंट ना नहीं अरे सूचीपत्र ना नहीं प्रत्येक चैप्टर रो तेनु ताको पढ़िला परे परे हमें जानि पुरो को चैप्टर गुडा रहिला जेमति तमे धरा जो एडी लर्निंग टू इंडिया रे पाठ पढुछ तम ना गुडा सब डॉक्यूमेंटेशन हेची रजिस्ट्रेशन हेची ऑफिस रे जने बसिले जानि परिबो ये पिला कोटिकार पिला ता मोबाइल नंबर कोन ता पेरेंट्स को एड्रेस कोन सब डिटेल्स लिस्ट हमें पाई परिबा सेमती हम संविधान बा हम कॉन्स्टिट्यूशन पाई किछि ना किछि नोबल थिंकिंग रहिची कोन नोबल थिंकिंग हेची जते बेले तमे धरा जो पाठ पढिलो 10th पास आउट हेला 10th पास आउट हेला परे परे तम पई घर लोक माने तुमको पचारथिबे तू कोन पाठ पढिबो आर्ट्स पढिबो ना साइंस पढिबो ना कॉमर्स पढिबो ना डिप्लोमा पढिबो ना आईटीआई पढिबो ना जमा पाठ पढिबो नि घरे रहि तुम पचारि थिबे तमे सेठी गोटे क्लैरिटी देथिबो मु आर्ट्स पाठ पढिबी काई आर्ट्स पाठ पढिबो भाई पढुची बड़ भाई साइंस पढुची मझिया भाई कॉमर्स पढुची तू आर्ट्स काई पढिबो तमे नियाति किछि गोटे व्यू पॉइंट देथिबो जे मु आर्ट्स पाठ पढिबार कारण मोर गोटे गोल अछि गोटे एक्सपेक्टेशन अछि किबा गोटे सक्सेस अछि जोटा को मु परस्यू करिबी जोटा को मु हासिल करिबी बाय लर्निंग आर्ट्स तमर एक्सपेक्टेशन अछि ना नहीं किछि जदी हमें आर्ट्स सब्जेक्ट रे अछि कि किछि गोटे एक्सपेक्टेशन बा सपोजिशन रखि जना नहीं पॉजिटिव थिंकिंग रखि जना नहीं तमे कोन भाबि छ जे मु आर्ट्स पाठ पढिबी जीवन में किछि करिबी नि जीवन में केबे हमर माने टीचर हेबी केबे मु लेक्चरर हेबी केबे मु आईएएस हेबी केबे मु ओएस हेबी केबे लॉयर हेबी केबे कोनसी प्रकार गोटे व्यू पॉइंट का सब तमर गोटे एक्सपेक्टेशन करिबो सेमती स्टूडेंट मन रख आमे जते बेले कॉन्स्टिट्यूशन ताको कोन कले हमर तयारी करि गेले एवं कॉन्स्टिट्यूशन रा इंट्रोडक्शन हला कि हमर प्रियम्बल हमर मुखबन प्रियम्बल रे ऑलरेडी हम कॉन्स्टिट्यूशन रा ऑब्जेक्टिव कोन आउ हमर फीचर्स गुडा कोन
सेही अनुसार मेंशन करा जायछि जेतेबेले तुमे क्लास को जीव कॉन्स्टिट्यूशन पेपर पढा हबो से माने इनिशियली तुमको पढाई पचारिबे व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया से प्रियम्बल टा आज मु बुझिबे नेक्स्ट when the constitution of India came into force प्रकृति constitution of India केबे थारु ऑपरेटिंग हला on 26th January 1950 जनवरी 26 1950 1950 जनवरी 26 से दिन थारु ऑपरेटिंग हला हमर कोन constitution when the constitution of India came into existence the constitution of India ऑपरेटिंग गोटे रही अडॉप्टेड रही हमर 1946 जोटा हमें कहूचे पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट सेशन ता केबे थारु तयारी करा गला बा केबे थारु प्रतिष्ठित बा उद्घाटित हला 9th डिसेंबर 1946 ए डेट गुडा को मन रखिबो 9th डिसेंबर 1946 when the constitution of India was enacted and adopted एवं adopted हेतिला केबे थारु the constitution of India was enacted and adopted by it on 26th November 1949 1949 समस्तंकर वर्तमान रेस्पोंसिबिलिटी अछि वोराशियसली रीडिंग कर एगुडा का रीडिंग कले ऑटोमेटिकली डाउट आसीबो मु जोडा सोशियोलॉजी क्लास में कहउथिले पिला मानको डाउट आसीबे मते एगेन एंड एगेन क्वेश्चन करिवो कांसेप्ट क्लियर Next students, when did the first Republic Day was celebrated? Our first Republic Day celebrated hela 26 January 1950. 26 January 1950. When the Constitution Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent president. Dr. Rajendra Prasad gave a permanent president hele on 11th December 1946. The Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent president. Dr. Rajendra Prasad को permanent president हिसाब रे elect करा गला. Who were two vice presidents when Dr. Rajendra Prasad was the permanent president of the Constituent Assembly. Constituent Assembly रो जेतले permanent president हेतिले के ना Dr. Rajendra Prasad सेतेबेले आउ दुई जन vice president थिले. किए बीटी कृष्णमाचारी आउ जने होचंदी किए एचसी मुखर्जी. बीटी कृष्णमाचारी आउ जने हेले एचसी मुखर्जी who introduced the objective resolution of the Constituent Assembly. जवाहरलाल नेहरू ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अर्थात हम संविधान का हमें प्रतिष्ठा करिबा ये संविधान प्रतिष्ठा करिबार लक्ष्य कोन को लक्ष्य रे हमें को प्रतिष्ठा करै छै when the objective resolution was passed by the Constituent Assembly. The objective resolution was passed by the Constituent Assembly on 22nd January 1947 एवं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे हम संविधान रो लक्ष्य कोन सेगुडा का हमर प्रियम्बल रही छि एवं सेतेबेले जोटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्तमान होछि इंडिया रो पार्लियामेंट एगुडा के सब हमरे जीके पॉइंट रे डिक्टेट करी when the objective resolution is introduced in the Constituent Assembly. The objective resolution was introduced on 13th December 1946. समस्त देखुता कॉपी चेक करो जदि जोडा न मिसिला मते क्वेश्चन अराइज करबा हम रेक्टिफाई करबा then when the became fully sovereign when the Constitution of India became a fully Constituent Assembly became a fully sovereign body. केबे सोवरेन बॉडी हला पिले एक्चुअली सोवरेन अर्थ कोन इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली आमे केबे थारु स्वाधीन हेले सोवरेन हेले 15th अगस्त 1947 आमे एक्सटर्नली आम ऊपर को ब्रिटिश राजा इंटरफेयर कलानी बा इंटरनली हम देश भीतर मध्ये किछि कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉन्फ्लिक्ट आसिलानी हम संविधान को बेस करिक समस्त चलिले जेते स्टेट थिला सब स्टेट माने संविधान को बेस करी कोन कले कार्यक्रम. Next students, what do you mean by drafting committee? हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होवा पूर्वरु जो कमिटी गठन करा जायतिला ताको हमें कहले ड्राफ्टिंग कमिटी. The drafting committee was constituted on 29th August 1947 with Dr. B.R. Ambedkar as its chairman. B.R. Ambedkar जहां को मैं कहूं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तांकर पुरोहित रे तांकर चेयरमैनशिप रे प्रकृति रे ड्राफ्टिंग कमिटी हेल्ड अप.
से मेंबर माने किए थिले सिना सी हेले चेयरमैन आ मेंबर माने किए थिले देखो पीएल मित्तर हमर ई गोपाल स्वामी अयंगर आलाड़ी कृष्ण स्वामी के एम मुंशी शायद मोहम्मद सादुल्ला ई एन माधव राव आ डीपी खैता ये जो मेंबर मान का ना तुमको मन रखिया को पड़िबो रिपीटेडली घोषिक मन रखिया को पड़िबो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन हेले के ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर आ जो मेंबर माने रहितले ए मेंबर मान कर ना तापरे पिले गोटे क्वेश्चन हु इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे बीएन राव बीएन राव थिले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एवं से प्रस्ताव देइदिले भारत वर्ष पई गोटे संविधान निहाती जरूरी जो संविधान को बेस करी भारत वर्ष तार कौन करिवो राजनीतिक कार्यक्रम एवं लोक मानकर अग्राधिकार बेसिस रे निजे निजर जुक्ति साब्यस्त करि परिबो when the final session of the constituent assembly was held the final session of the constituent assembly was held on 24th January 1950 final session तापर पर came into force on 26th January 1950 how long do to frame the constitution of India by the constituent assembly केते दिन समय नैथिला constituent assembly प्रकृत रे संवैधानिक बा संविधान को प्रस्तुत करिया पई 2 वर्ष 11 मास 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन so students what amount was spent for making the constitution a constitution तैयारी करिया पई केते खर्च हेइथिला near about 64 lakhs हमर 63 लाख 96,273 रुपीस यहीटा को मैक्सिमम जीके बही रे 64 लाख बोली कंसीडर करूचे तेणु एटा थिला हमर पॉलिटिकल साइंस रो मल्टीप्लिकेशन ओके पिले फॉर योर रिमेम्बरेंस इफ एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोन कहबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड meaning of a constitution supreme law of the land try to repeat constitution supreme law of the land who is the father of the constitution B.R. Ambedkar acha who passed the objective resolution Jawaharlal Nehru passed the objective resolution acha जदि हमें कहबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो विशेष करी परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो के रही दिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ दुई जन सपोर्टिंग थिले वाइस प्रेसिडेंट तंग ना कोन मुखर्जी अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपन गोटे कहबा सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशन बा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड व्हाट इज द रीजन नो वन कैन वायोलेट द लॉज प्रोवाइडेड और इम्बाइब्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रे जते नियम रही छि ताकू के वायोलेट करि परिबे ओ पिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन आउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत गुडा रिसोर्सेस हमें बाहर आनी छे मो उदाहरण स्वरूप कहि बिले जेतेबेले इंडिया इंडिपेंडेंट हला विभिन्न कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन को विशेष करी हमें सर्च कलु विभिन्न कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें लर्न कलु विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन को हमें प्रैक्टिकेबल सेंस रे जज कलु आउ ता देरे बहुत किछि रोल रहला बी आर अंबेडकर देखिले को फैक्टर गुडा हम इंडियन पई अप्रोप्रिएट हे परिबो मो उदाहरण स्वरूप गोटे कहबी मु गोटे होटल कली किंतु मते रोषे आसेन होटल कली मु रोषे आसेनी एवं लर्निंग ट्री इंडिया रो पिला मानको मु कांटेक्ट मिले खाइबा को देबी ताले मु कोन कली रोषे करिबी राइस आनली से पुओ घर मागी दे डाल आइले आंको घर मिक्सचर आइले तांको घर खट्टा आइले तांको घर खीरी आइले तांको घर मु कोन कली लर्निंग ट्री इंडिया रो पिला मानको देई देली पिला कोन कहले सार बहुत बढ़िया रोषे करछन किंतु मु बरोड कली कोडू और भाई अर्थ बुझी परछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हबा हमें फॉलो करले को कॉन्स्टिट्यूशन को लाइन रे सक्सेस हे जी से प्रिंसिपल गुडा को हमें आनी अडॉप्ट करबा अर्थ बुझी पाइलो ना नहीं मु कहबी अमेरिका जत्ते कॉन्स्टिट्यूशन अछि डेमोक्रेटिकली वेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन धनी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेरिका अमेरिका रो किछि किछि कांसेप्ट हमें बरोड करले पुणी देखिबा कुआ जाय डेमोक्रेसी इज हेल्दी इन ब्रिटेन
wealthy in America and poor in India. गणतंत्र शासन हेल्दी रही ग्रेट ब्रिटेन रो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कॉन्सेप्ट आनिले अमेरिका रो कौन कॉन्सेप्ट आनिले जापान रो कौन कॉन्सेप्ट आनिले प्रत्येक कंट्री जो कंट्री रो हमें जो कॉन्सेप्ट आनिचे से बाबत रे डिटेल्स को डाकी देउची जोटा कि तुमको हेल्पिंग करिवो कारण एटा क्लास में निश्चित रूप से सार पहले गोटे हेडिंग दियो sources of the constitution sources of the constitution sources of the constitution listen students the government of India act the government of India act the government of India act 1935 the government of India act 1935 I can de lekha pile lekha the constitution of India the constitution of India has taken the constitution of India has taken 250 articles 250 articles from 250 articles from this act the government of India has taken 250 articles from this act second point lekho British constitution British constitution hyphen de lekho parliamentary democracy hyphen de lekha parliamentary democracy comma rule of law office of the speaker office of the speaker office of the speaker तापर लिखा law making proceedings and others proceedings 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 and others next point USA constitution hyphen de lekho fundamental rights comma judiciary review
vice president, vice presidents, etc. तापर पिले लेख हेडिंग दियो Canadian Constitution, Canadian, 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 CANADIAN. किए पार्टी करू छथि सर साथी मंटू सर मना गलो लेख Canadian Constitution आई पिन दे लेख quasi federal state, quasi, QUASI, quasi federal state, quasi federal state, comma, residuary powers, RESIDUARY, residuary powers, etc. Residuary powers, etc. Next, students, Irish Constitution, Irish, 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 Irish Constitution. Hyphen de lekha. Directive Principles of a State Policy. Directive Principles of a State Policy. बा जोटा कामे कहउचे DPSP. DPSP बा Directive DIRECTIVE. Directive Principles. Principles of a State Policy. Of a State Policy. 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 तापर लेखो Russian Constitution. Russian, RUSSIAN, Russian Constitution. Hyphen de lekha fundamental duties. Fundamental duties. Fundamental duties. तापर पिले लेखो German Constitution, Germany, GERMANY, Germany Constitution. Germany Constitution ने हाइपेन दियो emergency provision, emergency, EMERGENCY, emergency provision, EMERGENCY, emergency provision सेटा हला Germany provision, 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 emergency provision एटा हमें फॉरवर्ड कोले कोडो जर्मनी रो पिले फर्स्ट पॉइंट थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोन लिखि दिले द गवर्नमेंट ऑफ बरोड देखो पिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली थिला 395 आर्टिकल्स आम कॉन्स्टिट्यूशन जो जो गुड़ाक नीति नियम गुड़ाक आर्टिकल माध्यम रे सब गुड़ा लिखित आकार रही एवं से जो कॉन्सेप्ट को हमें बरोड कले हमर विशेष करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मुझे जब क्वेश्चन अराइज करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमें कौन डिराइव करिचे ना 250 आर्टिकल्स 250 आर्टिकल केवल आछि कोडू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तमन को भीतर जानी थिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा ऊपर फोकस करतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा ऊपर विशेष करी फोकस करतिला डायरकी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तनु इंडिपेंडेंट इंडिया हबो बोली ये माने स्ट्रेटेजिकली गोटे गोटे कोन करतिला ना कॉन्फ़िगरेशन गोटे गोटे रफ नोट एस्टिमेट कला बडिया करिदिली केमि केबे इंडिया हबो इंडिपेंडेंट आ को स्ट्रेटजी ऊपर हम इंपोर्टेंस दबा एवं जो गुडा का प्रकृति रे प्रोविजन थिला हम कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर माना को पाई 395 रु 250 आर्टिकल फॉरवर्ड कले हमें कोडू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
खाली एतिक मन रख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू 1935 रो हमें कौन बरोड कले 250 आर्टिकल्स। सेकंड पिले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तमे जानी थिबो ग्रेट ब्रिटेन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंडन इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हम गवर्नमेंट रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेतबे तयारी हेछि ता पूर्वरु तुमे जानि थिबो 200 वर्ष जो शासन करचंती नियर अबाउट ब्रिटिशर माने तांकर गोटे ही फिलोसॉफिकल बैकिंग रहिला हम कॉन्स्टिट्यूशन जेतबे तयारी हबो मैक्सिमम टाइम ब्रिटिशर मान को प्रिंसिपल को हमें फॉलो करिबा कारण 200 वर्ष तक पूर्व में शासित रहिছে तेनु हमें कोन कोन बरोड कले पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पिले हमर जदी कहिबा हमर सेंट्रल लेजिस्लेचर हमर लॉ मेकर किए लेजिस्लेचर लॉ एग्जीक्यूटिव किए एग्जीक्यूटिव लॉ को गाइड करिबा किए जुडिशियरी तल हमर सेंट्रल लेजिस्लेचर किए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एवं जो पार्लियामेंट ताकु नै गठित लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति होना नहीं तेनु लॉ मेकिंग प्रोसेस ता साधारणतः कोन रहउची हमर पार्लियामेंट होची गोटे सुप्रीम हाउस एंड लॉ मेकिंग आई मीन कॉन्फ़िगरेशन तेनु हमें बरोड कले पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी अर्थात पार्लियामेंटरी सिस्टम इंडिया रे रहिबो ग्रेट ब्रिटेन रे पार्लियामेंटरी सिस्टम अछि इंडिया रे मध्ये पार्लियामेंटरी सिस्टम रहिबो हमें कहले लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति इंग्लैंड रे सेमति दुईटा हाउस अछि गोटे कोन हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स आउ हमर जेमति इंडियन प्रेसिडेंट तांकर सेमति के इंग्लैंड रो which person नाइ that is the representation तापर पिले रहउची रूल ऑफ लॉ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रूल ऑफ लॉ माने कोन आईनी आगरे समस्ते समान आईनी आगरे समस्ते समान मु कहबी गोटे रिक्शा पुल से वोट देला ता वोट रो मूल्य कोटे ना नै भारत रो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट देले कोटे वोट ना नै सेठी कोन वोट रो लेखा होची ये रिक्शा पुलर रो वोट सेटा द्रौपदी मुर्मू कर वोट बोली पॉलिटिकल फील्ड रे ऑलमोस्ट ऑल आर इक्वल पॉलिटिकल फील्ड रे सो फार एज वोटिंग बिहेवियर इज कंसर्न सो फार एज वोटिंग राइट इज कंसर्न अलगा फील्ड रे वेरिएशन आसुछ तेनु रूल ऑफ लॉ इन द सेंस ऑल आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ समस्त को समान भाव में ट्रीटमेंट करा जीवो आईनी आगरे आईनी हिसाब रे तमे एटी पाठ पढुछ 30 जण पिला अछ मु जो वर्षन को गोटे प्रकार वर्षन को ना 30 जन को 30 प्रकार गोटे प्रकार आ सबुठर बड़ जिनस हैला एई वर्षन को किए नै करी एक्टिवेट करि परिबो कि अपडेटेड करि परिबो कि काम रे लगै परिबो दैट इज एला राइट नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ गोटे रहउची हमर ऑफिस ऑफ द स्पीकर स्पीकर तुम जानि थिबो स्पीकर पोस्ट स्पीकर कर परफॉर्मेंस कोन स्पीकर कोन करंदी मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द लोकसभा as well as state legislative assembly हमर सेंट्रल लेवल स्पीकर के अछंती ओम बिरला स्टेट लेवल स्पीकर के सुरमा पारी तेनो स्टेट लेवल लॉ एंड ऑर्डर कोडी ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रे मेंटेन करछन स्पीकर एवं जदि हमें जीवा लोकसभा लोकसभा रे मध्ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करछन के स्पीकर से प्रोसीडिंग गुडे को हमें बरोड कोले कोडू इंग्लैंड नेक्स्ट लॉ मेकिंग प्रोसीडिंग्स लॉ जेतबे तयारी हबो अमेंडमेंट हमर विशेष के हमें पंक्चुएट करिबा किबा रेज करिबा जो प्रोसीजर हमर अछि विभिन्न प्रकार रीडिंग गुरा ताको मध्ये हमें बरोड करचे कोड इंग्लैंड रो एटा चैप्टर जेतबे पढा हबा आउरी कांसेप्ट क्लियर तापर पिला आसी गला हमर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन नो हमें पिला बरोड कले हमर फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू ये कांसेप्ट गुडा सब बरोड कले कोड ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ओके पिले when we discuss about तुमको जदी के क्वेश्चन पचारिबो जे फंडामेंटल राइट्स ता हमें को कॉन्स्टिट्यूशन नु बरोड करिचे बोली फंडामेंटल राइट्स ता को कॉन्स्टिट्यूशन बरोड हेची फंडामेंटल राइट्स बरोड करा गला यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन आउ कोन बरोड करा जाईची जुडिशियल रिव्यू मध्ये कोड बरोड करा गला यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रे जने वाइस प्रेसिडेंट रहिबे से कांसेप्ट हमें कोड बरोड कले नेक्स्ट स्टूडेंट्स कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन पाइले ना क्वासी फेडरल स्टेट रेसिडुअरी पावर देख पिले कनाडा रा कॉन्स्टिट्यूशन नो हमें बरोड कले क्वासी फेडरल स्टेट्स हमें पिले 10th लेवल ले गोटे पढिथिबो चैप्टर संघीय राष्ट्र
जोटा कहूँ आम फेडराल स्टेट। फेडराल स्टेट रे कौन हुए पावर टा डिविजन हो जाए। मुझे केंद्र सरकार तुम 28 राज्य मो क्षमता को मु तुमको ऑलरेडी कौन कली शेयरिंग करदेली एटा फेडराल। किंतु मु कौन करी केंद्र हिसाब से सब जन पावर कैप्चर कर रखी तुमको दरकार बेले पावर टा देवी सेटा कौन यूनिटरी ऐकिक राष्ट्र आ गोटे